Assalamu alaikum, welcome to the new lecture. This lecture is the continuation part of the previous lecture in which we studied about destructor, and in this lecture we are going to practically demonstrate how we will use destructor. So सबसे पहले basic C++ program लिख देते हैं #include #string #include string using space std int main return 0. Save the program. This is lecture 5.6. okay, now let me take a class student. It has two data members, string name, int age, and the public part of the class contain a constructor. So student, and this is default argument constructor, means if I want I can pass the arguments, and also I have the choice not to pass any argument. So age 0 and n assign, for example, new student for example. ठीक है, और अगर मैं पैरामीटर पास कर दूँ, सो नेम विल बी initialize as n and age will be initialized as the new values. Now void get student, ठीक है, to print the data of the student. So cout name is name in l, ठीक है, and cout the age is age in line. Now I want to create a destructor, ठीक है. So destructor के बारे में हमने कहा था कि this start from this tilde sign and the name of the destructor will be same as the name of the class student, ठीक है, और इसके कोई पैरामीटर नहीं होंगे इसके अंदर. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल the object is going to destroy, ठीक है. इसके अंदर मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया. अब इस तरह करता हूँ कि स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एस, इसमें पैरामीटर पास कर दो, फॉर एग्जांपल सील और 30, ठीक है, और फिर एस डॉट गेट स्टूडेंट, ठीक है. प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं. एज इंट, सॉरी ये ए होना चाहिए, ठीक है. स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक है. देखे नेम सईद, एज 30, ठीक है, और यहाँ पर देखे ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो गया. दिस इज डिस्ट्रक्टर, ठीक है, कि जस्ट बिफोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता चल जाए कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी से वॉश आउट हो रहा है. और ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को हमने इस तरह कॉल किया है बाई पासिंग द पैरामीटर्स, ठीक. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग द वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज़.